हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं फिर से एक स्पीड टेस्ट बिटवीन Realme X3 जो कि एक 16,000 रुपये का स्मार्टफोन है। साथ में है Samsung Galaxy A50s जो कि एक 21,000 रुपये का स्मार्टफोन है। 5,000 रुपये का बड़ा गैप दोनों स्मार्टफोन के बीच में देखने को मिल जाएगा। दोनों में आपको ग्लास का बैक देखने को मिलता है, दोनों काफ़ी प्रीमियम लगता है। आप लोगों को बता दूं, दोनों स्मार्टफोन मेरा 4GB वेरिएंट है। X3 में आपको मिल जाएगा 64GB स्टोरेज और A50s में 128GB। कैमरा की बात करूँ तो 64 मेगापिक्सल ऑफर करता है Realme X3 एंड 48 मेगापिक्सल ऑफर करता है A50s। गाइस, Realme X3 में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ A50s में 32 मेगापिक्सल का। X3 में आपको मिलेगा Snapdragon 712 और A50s में आपको देखने को मिलेगा Exynos 9611। सेम प्रोसेसर जो आपको 14,000 रुपये के सैमसंग के स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा M30s में। तो गाइस चलिए, ये प्रोसेसर कितना पावरफुल है और स्नैपड्रैगन 712 के सामने X3 के सामने A50s टिक पाता है या नहीं। मैं कुछ और वीडियोस भी बनाना चाहूँगा इन दोनों फ़ोन्स के बीच में, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो गाइस चलिए, दोनों का स्पीड टेस्ट करते हैं, दोनों में कुछ ऐप्स ओपन करते हैं, फिर रैम मैनेजमेंट देखेंगे, दोनों में कुछ वीडियोस भी प्ले करके दिखाऊंगा और साथ में कुछ म्यूजिक भी सुना दूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू वेरी मच। दोनों स्मार्टफोन में मैंने ब्राइटनेस लेवल को फुल कर दिया है और ऑटो ब्राइटनेस को भी डिसेबल कर दिया है। बहुत से लोग कंप्लेन करेंगे, गाली भी दे सकते हैं, चीटिंग किया है, X3 का डिस्प्ले लो क्यों लग रहा है, डिम क्यों लग रहा है। तो आप देख सकते हो, ये फुल मैंने कर दिया है और ये है Realme X जिसका डिस्प्ले आप देख सकते हो सुपर ब्राइट है। गेम लॉन्चर डिसेबल कर दिया है और गेम स्पेस यानी Realme X3 के गेम स्पेस से सारे ऐप्स को भी रिमूव कर दिया है। बैटरी जो सेटिंग्स है वो दोनों में ऑप्टिमाइज्ड है, यानी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही मैंने रखा है। दोनों स्मार्टफोन को मैंने सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया है। गाइस, एक बार मुझे नेटवर्क का इशू दिखा, यानी जो मेरा वाईफाई कनेक्टिविटी था यहाँ पे काफ़ी पुअर देखने को मिल रहा था बारिश के कारण से, तो मैंने दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया है। देख सकते हो आप Realme X एंड ब्राइटनेस
तो ये है Realme XT एंड अब मैं हेडफोन से आपको म्यूज़िक सुनाने की कोशिश करता हूँ। गाइस ये है Samsung Galaxy A50s। स्पीकर के मामले में मुझे Realme XT ज़्यादा बेटर लगा क्योंकि इसमें आवाज़ जो था उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, बेस काफ़ी अच्छा था, बीट्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे थे। लेकिन सैमसंग में थोड़ा सा दबा हुआ था और सेम एक्सपीरियंस लगभग आपको हेडफोन के साथ भी होगा, यानी बेस वगैरह Realme XT में ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको एंड सैमसंग थोड़ा सा दबा हुआ लगेगा। तो ओवरऑल म्यूज़िक के लिए Realme XT मैं आपको रिकमेंड करूँगा। वैसे फुल कंपैरिजन वीडियो में मैं कुछ और टाइम दूंगा और कुछ और डिटेल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करके चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथ में एंड गाइस देखते रहिए iPhone Unbox। थैंक यू वेरी मच।